फ्यूचर टेंस भविष्य काल, शैल बी, विल बी, इंट्रोडक्शन। जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी, विल बी का प्रयोग होता है। जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे, आई, वी, शैल बी, यू, विल बी। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। हम लोग भूखे रहेंगे, आई शैल बी हंग्री। तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट। नोट, यहां आप यह जान लें कि शैल बी और विल बी का प्रयोग यह दर्शाता है कि स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। अगर आप किसी को देखकर वेशभूषा से किसान होने का अंदाज लगाते हैं और कहते हैं वह एक किसान होगा, तो इसका अनुवाद ही वुड बी अ फार्मर होगा और यह वर्तमान समय का बोध कराएगा। यहां इसकी इंग्लिश ही विल बी फार्मर नहीं होगी। ही विल बी अ फार्मर का अर्थ है कि आने वाले समय में वह एक किसान बनेगा और अपनी स्थिति को कायम रखेगा। इंस्टेड ऑफ शैल बी, इन कोलोकल लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में विल बी का प्रयोग होता है। विथ ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन एंड नंबर चार्ट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज आई विल बी हैप्पी और वी शैल बी हंग्री। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए शैल, विल के बाद नॉट लगाना पड़ता है और नॉट के बाद बी के बाद कोई पूरक, जैसे मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी रेडी। वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में यदि क्या लगा रहे तो आप अनुवाद की शुरुआत सब्जेक्ट के अनुसार शैल, विल से करें। जैसे क्या राम तैयार रहेगा, विल राम बी रेडी। क्या मैं परेशान रहूंगा, शैल आई बी ट्रबल। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री। क्या वे लोग नेता बनेंगे, विल दे बी लीडर्स। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, शैल आई नॉट बी हेल्दी। क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, विल सीता नॉट बी इल। WH वर्ड, व्हेन कब, व्हाई क्यों, एंड हाउ कैसे का प्रयोग। प्रश्नवाचक वाक्यों में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि रहे तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखें, फिर शैल, विल, इसके बाद क्रमशः सब्जेक्ट, बी और कंप्लीमेंट पूरक दें। इसके लिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। राम क्यों थका रहेगा, व्हाई विल राम बी टायर्ड। मैं क्यों बीमार रहूंगा, व्हाई शैल आई बी इल। आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, हाउ विल यू बी हैप्पी। Friends, as we have already completed present, past, similarly we go through the future tense. As we have applied in the present tense, am, is, are. In past tense, was, were. Similarly, in the future tense, we apply shall be and will be. Now we need to understand the chart of person and number. So in the workshop manual book, the chart of person and number given, where we can understand how to apply shall be and will be. Along with I, we apply shall be. Along with we apply will be. Along with you, second person, singular number and plural number, we apply will be. Along with third person, singular number and plural number, we will be applying will be. After completion of person and chart structure of sentence, you need to understand. The first is subject plus shall be plus object. Second is subject plus
shall will plus not plus be plus object. Third is shall will plus subject plus be plus object plus question mark. Fourth is shall will plus subject plus not plus be plus object plus question mark. Fifth is WH word plus shall be plus subject plus be plus object plus question mark. Sixth is WH form of word plus shall be plus subject plus not plus be plus object plus question mark. These structure of sentence will allow you to understand the basic concept of develop the sentence within you. But apart from that, you need to do the again meditational way of practice with your tongue twisting with the help of shall be and will be. Now, we will be doing tongue twisting through the help of workshop manual book along with shall be and will be. That is, I shall be happy, I shall not be happy, shall I be happy, shall I not be happy, how shall I be happy, how shall I not be happy, we shall be happy, we shall not be happy, shall we be happy, shall we not be happy, how shall we be happy, how shall we not be happy, you will be happy, you will not be happy, will you be happy, will you not be happy, how will you be happy, how will you not be happy, he will be happy, he will not be happy, will he be happy, will he not be happy, how will he be happy, how will he not be happy, she will be happy, she will not be happy, will she be happy, will she not be happy, how will she be happy, how will she not be happy, it will be happy, it will not be happy, will it be happy, will it not be happy, how will it be happy, how will it not be happy, that will be happy, that will not be happy, will that be happy, will that not be happy, how will that be happy, how will that not be happy, Sita will be happy, Sita not will happy, will Sita be happy, will Sita not be happy, how will Sita be happy, how will Sita not be happy, they will be happy, they will not be happy, will they be happy, will they not be happy, how will they be happy, how will they not be happy, those will be happy, those will not be happy, will those be happy, will those not be happy, how will those be happy, these will be happy, these will not be happy, will this be happy, will this not be happy, how will this be happy, how will this not be happy. Friends, as we have already done the present tense, past tense, future tense, this is the basic concept of am, is, are, was, were, shall be, will be. Now, we need to understand how to do the practice of these all uses. So, when you will do 10 times practice of am, is, are, was, were, shall be, will be. So, am, is, are, was, were, shall be, will be. Every tense has 72 sentences in present, past, future. The combination of these all three will become 216 sentences. So when you will finish 72 sentence 10 times of am, is, are, then you will finish was, were 72 times. Then you will finish shall be, will be 72 times. Similarly, you will finish the whole chart of mouth translation in the last with the help of 72 plus 72 plus 72. These 216 sentences, you need to do the practice in 2.5 minutes. For example, we can speak 72 sentences in 1.5 minutes. Now, this is really tough to make you understand how to develop the systematic way to become a speaker of English. You need to understand the basic part of your mouth twisting. Once you'll start doing first day, second day, third day, automatic slowly in a study, your tongue will twist with the am, is, are, was, were, shall be, will be. So, these 216 sentences you can speak in 4.5 minutes or in 5 minutes.
your speed will become approximate more than 50 sentences more or lesser than, but you would able to pronunciate your sentence in very fluent manners, means you will be not getting any hesitations when you will pronunciate am, is, are, was, were, shall, we, will be. So I'd like to give you a really big thanks that after completion of present, past, future, and this will allow you to become fluent speaker of English. वे लोग ईमानदार रहेंगे. They will be honest. वह भूखा रहेगा. He will be hungry. वह महान आदमी बनेगा. He will be a great man. वह भूखी रहेगी. She will be hungry. वह एक नेता होगा. He will be a leader. हम लोग नेता बनेंगे. We shall be leaders.